बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं के सालाना इजलास से कबल सहाफ़ियों से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। Paralyzing the global response to the dramatic challenges we face. Our world is blighted by war, battered by climate chaos, scared by hate, and shamed by poverty, hunger, and inequality. Conflicts and unrest continue to rage. The war in Ukraine is devastating a country and dragging down the global economy. And despite the Black Sea Grain Initiative and the agreement that we are doing everything to make it happen in reality, to get Russian food and fertilizers to global markets, there is a real risk of multiple famines this year. Global hunger began to rise before the pandemic and has never recovered. And the cost of living crisis is hitting the poorest people and communities hardest with dramatic effects. And the rights of women and girls are going into reverse, and most developing countries have no fiscal space and no access to the financial resources needed to recover from the COVID-19 pandemic and protecting their people from the devastating impact of climate change. The solidarity envisioned in the United Nations Charter is being devoured by the acids of nationalism and self-interest, by a shocking disregard for the poorest and most vulnerable in our world, by politicians who play to people's worst instincts for partisan gain, by prejudice, discrimination, misinformation, and hate speech that pit people against one another, and by a global financial system that penalizes those with the least, by fossil fuel corporations killing the planet to rake in the most. My speech to the General Assembly will address these issues with concrete recommendations and a call to action. As fractures deepen and trust evaporates, we need to come together around solutions. Solutions like those that will be showcased at the Transforming Education Summit. People need to see results in their everyday lives, or they will lose faith in their governments and institutions, and they will lose hope in the future. And so this year's general debate must be about providing hope and overcoming the divisions that are dramatically impacting in the world. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं के सालाना इजलास से पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इजलास 20 सितंबर को आला सतही बहस के साथ शुरू होगा। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बात की। We'll take a question or two. Yeah. Well, ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence and welcome. I have just returned from Pakistan, where I looked through a window into the future. A future of permanent and ubiquitous climate chaos on an unimaginable scale. Devastating loss of life, enormous human suffering, and massive damage to infrastructure and livelihoods. It is simply heartbreaking. No picture can convey the scope of this catastrophe. The flooded area is 3 times the size of my entire country, Portugal. And what is happening in Pakistan demonstrates the sheer inadequacy of the global response to the climate crisis and the betrayal and injustice at the heart of it. Whether it is Pakistan, the Horn of Africa, the Sahel, small islands, or least developed countries, the world's most vulnerable, who did nothing to cause this crisis, are paying a horrific price for decades of intransigence by big emitters. G20 countries are responsible for 80% of emissions. And they are also suffering the impact of record droughts, fires, and floods. But climate action seems to be flatlining. If 1/3 of G20 countries was underwater today, as it could be tomorrow,
perhaps they would find it easier to agree on drastic cuts to emissions. All countries, with the G20 leading the way, must boost their national emissions, must boost their national emissions reduction, and must limit the world's temperature rise to 1.5 degrees. Pakistan and other climate hotspots need flood-resilient infrastructure now. And those most responsible for emissions must step up with the funds for adaptation. At least half of all climate finance and climate resilience should go to adaptation to protect people and the economy. नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम अमरीका और पाकिस्तान के वसीतर बाहिमी ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। 8 सितंबर को अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत और देखभाल के मुमकिना प्रोग्राम के लिए $450 मिलियन इमदाद की मंजूरी दी थी। इन खिदमात की मुमकिना फ़रोख्त के तहत पाकिस्तानी तैयारों को नया असलहा या सलाहियत फराहम नहीं की जाएगी, बल्कि मौजूदा सलाहियत की देखभाल की जाएगी। एक सवाल के जवाब में अमरीकी तर्जमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमने हाल ही में कांग्रेस को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के F-16 प्रोग्राम की देखभाल और देरपा खिदमात के लिए $45 करोड़ मालियत की मुजव्वज़ा फ़रोख्त के बारे में मुतल्ला किया है। नेड प्राइस ने बात जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी में एक अहम शराकतदार है और ये अमरीका की दरीना पॉलिसी है कि ऐसे प्रोग्राम की देखभाल और बहाली के पैकेजेस फराहम किए जाते हैं। Recently notified Congress of a proposed foreign military sale valued at $450 million, as you said, for maintenance and sustainment services for the Pakistani Air Force's F-16 terrorism partner. And as part of our long-standing policy, we provide life cycle maintenance and sustainment packages for U.S. origin platforms. Pakistan's F-16 program, it's an important part of the broader U.S.-Pakistan bilateral relationship. And this proposed sale will sustain Pakistan's capability to meet current and future counterterrorism threats by maintaining the F-16 fleet. This is a fleet that allows Pakistan to support counterterrorism operations, and we expect Pakistan will take sustained action against all terror. पाकिस्तान ने FATF के हालिया दौरे को कामयाब करार दे दिया। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक FATF की जानिब से दिए गए अहदाफ हासिल करने का ज़मीनी जायज़ा लेने वाली टीम से तमाम मुलाकातें खुशगवार माहौल में हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तकनीकी टीम ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। FATF टीम ने तमाम नकात पर हर इदारे से तफसीली बातचीत की। हमारे नुक्ता नज़र से FATF टीम का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हबीब बैंक लिमिटेड के चेयरमैन और आगा खान फंड फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्टर सुल्तान अली अलाना ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आगा खान को पाकिस्तान में सैलाब से निपटने की कोशिशों के लिए फराख दिलाना ताउन पर खिराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्क की मुआशी सूरत हाल और तरक्की के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में हबीब बैंक लिमिटेड के और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दीगर इदारों के किरदार को सराहा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि चंद रोज़ कबल प्रिंस रहीम आगा खान ने वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता करके सैलाब मुतासरीन के लिए $10 मिलियन अमरीकी अतिया का ऐलान किया था। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 सितंबर से कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹9.62 कम होकर ₹235.98 से ₹226 तक हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत ₹3.04 इजाफे के बाद ₹247.26 बढ़कर ₹250.30 हो सकती है। इंडस्ट्रियल ज़राए के मुताबिक 1 सितंबर से डीजल की कीमत 15% बढ़ी है, यानी ₹6.46 बढ़कर ₹133.93 से ₹140.38 फी लीटर हो गई थी। पाकिस्तान में गंदम की कीमत ने 75 साला तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 14 सितंबर 2022 को ओपन मार्केट में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क भर में गंदम की रिकॉर्ड गिरानी हो गई है। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जोड़वा शहरों में गंदम की कीमत ₹3,560 से ₹3,600 फ़ी 40 किलोग्राम तक पहुंच गई है। अगर हुकूमत ने सरकारी कोटे में फौरी इजाफा ना किया तो ओपन मार्केट में गंदम माफिया अपने गैर कानूनी स्टॉक्स की कीमत तेजी से बढ़ाएगा। मार्केट में ₹3600 फ़ी 40 किलोग्राम तक गंदम की कीमत होने के नतीजे में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 200 से ज़ायद फ्लोर मिलों ने
15 किलो आटे के थैले की कीमत जो कि पहले 1300 रुपये हुआ करती थी, इसे 1600 रुपये तक कर दिया है। आर्मीनिया अजरबैजान में नगोर्नो काराबाख में एक बार फिर जंग छिड़ गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान सरहद पर 3 मकामात पर झड़पें जारी हैं। अब तक अजरबैजान के 50 और आर्मीनिया के 49 फौजी मारे जा चुके हैं। 2020 में काराबाख जंग में अजरबैजान ने आर्मीनिया से अपने तमाम इलाके आज़ाद करवा लिए थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारा लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।